नायब वज़ीर आज़म इशआक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम पाक फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के तैयारों और ड्रोन्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा किया और किसी भी मिस एडवेंचर का ताकत से जवाब दिया जाएगा। 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year. Pakistan, under the leadership of the then the Army Chief, Sayyid Asim Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defence Forces, gave it a determined and decisive response, and that Pakistan will defend every inch of its territory while safeguarding its citizens. That the unresolved Jammu and Kashmir dispute continues to undermine peace and security in the entire South Asia, in accordance with the relevant Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty will be considered as an act of war. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।